Namaskar and a very good morning. Welcome to the audio class from Kotak Securities. I'm your host and guide, Anindya Banerjee. आज ओवरऑल रिस्क सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि एशियन इक्विटी मार्केट्स आर इन द ग्रीन और उसके साथ डॉलर इंडेक्स इज फ्लैट. यूएस बॉन्ड डील्स, ऑयल प्राइसेस, दे शुड नॉट हैव अ मच इम्पैक्ट. द डॉलर रुपी इन द ऑफशोर इज क्वाइट एक्सपेक्टेडली ट्रेडिंग फ्लैट अराउंड 80 to 80 ऑन द स्पॉट. बट अगर हम लोग डॉलर रुपी का प्राइस एक्शन को ऊपर नज़र दें तो एक चीज़ इज कमिंग आउट प्रीटी क्लियरली दैट हायर हाइज एंड हायर लोज. हाँ, लास्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ता से द मोमेंटम इज क्लियरली मिसिंग जो पहले था, द अपवर्ड मोमेंटम, बट द प्राइस स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट. दैट इज एक हायर हाई और हायर लो इज अ साइन ऑफ एन अप ट्रेंड एंड दैट इज हैपनिंग. सो यू कैन सी फॉर द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस ड्रिफ्ट के साथ एक स्क्वीज है इन द वॉलेटिलिटी. तो दिस सम टेक्निकल एनालिस्ट मे कॉल दिस एज अ वेज or can be termed as a leading triangle. That is the most important thing, because a leading triangle or a leading diagonal or a wedge का जो implications है वो totally different है. I'm not getting into the technical part of it, but basically it means that volatility is getting compressed. मतलब जो bulls and bears है उनका fight is becoming very very tough. तो ये सिचुएशन में ब्रेक डाउन जब तक नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट सेंसिबल टू टर्न बेरिश ऑन दिस मार्केट, एटलीस्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर. क्योंकि इफ यू लुक एट द इंटर मार्केट एंड द मैक्रो के हिसाब से तो रुपी शुड हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर, बट दैट्स नॉट हैपनिंग राइट फॉर द लास्ट 2 weeks. तो इसके लिए वी हैव टू फोकस ऑन प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक 82.55 ये लेवल के ऊपर डॉलर रुपी है तब तक the price action is still upward. So a kind of a slow drift which is happening in the USDINR. Now, when you are talking about कि अगर 82.55 के ऊपर है तो how to now trade it. See, 82.55 lower band है और upper में 83 और उसके ऊपर push किया तो 83.25 the all time high. Now this being the expected range till let's say the year end over the next 10 days. तो वो सिचुएशन में हाउ टू प्ले इट आउट. वन ट्रेड कैन बी यूज सेल अ स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल, बट एक चीज़ है, द ऑप्शन प्रीमियम्स हैव कम डाउन ड्रामेटिकली. सो इफ यू आर ट्राइंग टू सेल अ स्ट्रैंगल, योर प्रीमियम पिकअप इज गोइंग टू बी मच लोअर. सो स्ट्रैडल हैज़ टू बी डन, बट स्ट्रैडल हैज़ अ रिस्क. सो इसके लिए, बिकॉज इट हैज़ एन अनलिमिटेड रिस्क, यू हैव टू बी केयरफुल. योर पोजिशन साइज हैज़ टू बी स्मॉल. दैट्स पॉइंट नंबर 1. And point number 2, you need to maintain stops. So intraday you can manage the risk because there is a little risk of a gap, but overnight there are risks of gap. So keep that in mind. Our positional traders जो है, they can continue to buy the dip in USDINR. अगर आपको directional bet करना है तो then it makes sense to buy the dip, क्योंकि 82.55 के ऊपर जब तक है तो bias is upward based on price action. Again, I am saying based on price action. So you can take that as a view and you can buy the dip. But 82.55 के नीचे अगर टूट गया ये, then you should not be long in the market. Then we should look for shorting opportunities. So keep that in mind. And 83.25 के ऊपर ये breakout हो गया, then it's a clear case of a breakout. और जिस हिसाब से last कुछ सेशन में volatility squeeze हुआ है, अगर in case just for some reason 83.25 के ऊपर break होता है, then the move can be pretty sharp, because generally after a squeeze, when a breakout or a breakdown happen, the moves are very sharp because volume follows that breakout. So keep that in mind. So this is now how you can trade, basically focusing on short straddles or short strangles. And positional mein you can, if you want to bet on a direction, you keep buying the pullbacks, but your ultimate stop lot has to be below 82.55. Cross currencies में we should not see much of a movement. Keep an eye on the yen INR because Bank of Japan का जो policy meeting था उसका impact is still there. So that could be a currency to keep an eye on. So pullbacks can be bought in yen INR because the overall direction is upward. कल जो economic data का, कल actually कोई high profile economic data नहीं था, but even mid-tier data from US जैसे housing data and secondly consumer confidence, it was mixed. क्योंकि consumer confidence was strong at an 8-month high, but the housing data था that continues to point that the US housing market is slowing down dramatically. So that is something which will matter a lot in 2023. So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. A fantastic day ahead.